Hello, hello, hello. What's up, guys? Let me check my live. I hope I'm audible. Hello, hello, hello. आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सेशन है फॉर हाफ ईयरली एग्ज़ाम। वन शॉट ही रखा गया है। एक ही क्लास में सारे क्वेश्चंस हम लोग ख़त्म कर देंगे आज। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है। एक मिनट, लाइव ओपन करते हैं, चेक कर लेते हैं लाइव को थोड़ा। ओके, ओके। हेलो 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 हेलो। हाय सर, एक्सेल आदि। हेलो बच्चे, हेलो बच्चे। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। एक्सेल आदि। हेलो बच्चे, हेलो बेटा। यस, अच्छा ठीक है। तो आज का प्लान है कि आज हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, जिस चैप्टर को सबसे ज़्यादा टफ बोला जाता है, नॉट फ्रॉम टीचर्स, लाइक स्टूडेंट रेशो इज सेइंग कि ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा टफ होता है, स्टूडेंट रेशो इज सेइंग, बट कोई बात नहीं। आज इस एक होता है ना, इल्यूजन होता है कि चीज़ें टफ लग रही हैं, शायद इसको सही कर देंगे। आसान है सर, अरे वाह, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये सही है, ये सही है, आसान है, आसान है। देखो, सब कुछ डिपेंड करता है प्रैक्टिस पर, डेडिकेशन पर और कंसिस्टेंसी पर, राइट। एप्लीकेशन थोड़ा मुश्किल है, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जो एप्लीकेशन वाला चैप्टर है ना, उसमें तो बहुत कम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हो रहा है। अगर आप देखेंगे ना, ज़्यादातर वहाँ पर टैन थीटा लेकर पी अपॉन बी कर देते हैं, है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, है ना। काफ़ी इजी है वो चीज़ें भी, डोंट वरी, वो भी करेंगे, डोंट वरी। डायग्राम, हाँ, कई बार क्या होता है कि लैंग्वेज को समझना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि डायग्राम बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट वो भी क्वेश्चंस हम करेंगे, डोंट वरी। हाँ, वो नेक्स्ट सेशन रखेंगे किसी दिन, क्योंकि एप्लीकेशंस चैप्टर थोड़ा अलग है। आज क्या करना है, आज हमें बेसिकली फॉर्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, प्रूविंग वाले क्वेश्चंस, सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है ना ट्रिग्नोमेट्री का, वो आज हम ख़त्म कर देंगे इस वीडियो में। ओके जी, ये वीडियो मेरे हिसाब से हमारे चैनल पर 130 प्लस वीडियोस हैं, पर जो आज का वीडियो होने वाला है ना, ये जो लाइव सेशन होने वाला है, अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे का रहेगा एक्चुअली, ठीक है। और अगर ये किसी बच्चे ने मेरे साथ यहाँ पर कर लिया ना, तो आई एम श्योर यू कि सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर उस बच्चे के लिए ट्रिग्नोमेट्री ही रहेगा। जस्ट 1 सेकेंड, 1 मिनट। यस यस यस, एक्चुअली बहुत बच्चों ने बोला था मुझे कि सर ट्रिग्नोमेट्री कब आ रहा है, तो बेटा आज ट्रिग्नोमेट्री आ चुका है। ओके, तो आई होप कि सारे बच्चे हमारे जो रेगुलर लाइव स्टूडेंट्स हैं, वो ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ये जो क्लास है, बेसिकली ये एक RTQ सेशन है। RTQ सेशन क्या होता है, रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस, ओके। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर मैं ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ थ्योरी करवाऊंगा, क्वेश्चन कम होंगे, फिर मज़ा नहीं आएगा, है ना। इनको डिज़ाइन ऐसा किया गया है कि हम क्वेश्चन लेंगे और उससे हम बहुत सारी थ्योरी कर लेंगे। RTQ रिवीजन थ्रू क्वेश्चन, तो सर क्या इसका मतलब ये है कि थ्योरी डिस्कस नहीं होगा? ऐसा नहीं है बच्चे, ऐसा नहीं है। जो भी क्वेश्चन लिया जाएगा उसमें क्या होगा, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी थ्योरी लगेगी, वो आपको डिटेल में पढ़ाई जाएगी, ठीक है। उससे क्या होगा, एक नए क्वेश्चन से आप ज़रूर कंफर्टेबल हो जाएंगे। हाँ, स्टार्टिंग की जो चीज़ें हैं, जो एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहेगा 15 से 20 मिनट का, वो मुझे बताना ज़रूरी है कि ट्रिग्नोमेट्री में चीज़ें आ कहाँ से रही हैं और उनको हम अप्लाई कैसे करेंगे। और यस,
क्योंकि मैंने इस चैप्टर को इतना इजी बना रखा है बच्चों के लिए, तो वो सभी चीज़ें मैं आज बताने वाला हूँ कि एक फॉर्मूला को याद किस तरह रखना है ना, किस तरह हमें थोड़ा सा ट्रिक्स यूज़ करके किसी क्वेश्चन को जल्दी कैसे करना है ना। कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगे, जिनको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, एक एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ। ऑफलाइन में ये चैप्टर मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है, ऑनलाइन में फ़र्स्ट टाइम है, ओके, यहाँ पर ऑफलाइन में जब भी ये चैप्टर पढ़ाया था तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखने को मिला था। ऑनलाइन में मैंने पढ़ाया है वेदांतु पर यूट्यूब पर नहीं, तो आज हम यूट्यूब पर पढ़ने वाले हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है जी। अच्छा ठीक है, एक इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं आपको। आई होप कि बच्चे आ जाएं सारे। चलो हम शुरू कर देते हैं, विद इन टाइम दे विल जॉइन। ट्रिग्नोमेट्री, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड होता है ना, ये दो वर्ड से बनता है, दो वर्ड से बनता है। और जो दो वर्ड्स कौन से होते हैं, ट्राइगोन, ट्राइगोन, और एक होता है मेट्रॉन, ट्राइगोन एंड मेट्रॉन, ओके। ट्राइगोन का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ ट्राइंगल्स, मतलब अच्छा एलिमेंट्स ऑफ ट्राइंगल्स क्या है, मतलब ट्राइंगल में तो दो ही चीज़ें हैं, या तो साइड्स हैं या फिर एंगल्स हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, राइट, यस, उनकी बात हो रही है। और मेट्रॉन का मतलब क्या होता है, मेजर करना, मेजरमेंट, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स या सुशांत आर्ट्स। हेलो बच्चे, हेलो 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 जी। बेटा ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th यहाँ पर शुरू हो चुका है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, पूरा आपको नोटबुक लेकर बैठ जाना है, ठीक है। आई एश्योर यू कि हर क्वेश्चन यहाँ पर किया जाएगा और आपको सारे कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री के आज क्वेश्चन के थ्रू समझ आ जाएंगे। बस यू हैव टू बिलीव, यू हैव टू बी पेशेंस, राइट। आराम से बैठे रहना है और नोटबुक लेकर बैठना क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैथमेटिक्स को देखना बोरिंग है, पर उसको करना बहुत ही अच्छा है, ओके, यस, साथ साथ में करना ज़रूरी है। तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें क्या होता है, वी विल डील विद द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। उसको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, ठीक है, उसको मेजर किया जाता है। और एक और चीज़, जब भी मैंने ऑफलाइन में ये सब्जेक्ट पढ़ाया है, ओके, तो मैंने एक चीज़ बोली है ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते समय, द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो क्या होता है, नेवर एवर थिंक फॉर ट्रिग्नोमेट्री इफ यू डोंट हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल। सही है, अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल ये वाली सिचुएशन नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सोचना भी मत, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर ये सिचुएशन होगी तभी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगी, ठीक है। हाँ, कई क्वेश्चंस होंगे वहाँ पर क्या है, आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया, आपको कुछ और ट्रायंगल दे दिया, राइट एंगल नहीं दिया, पर वहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, इट मीन्स क्या करना पड़ेगा, मुझे राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, है ना। ऐसा करना पड़ेगा कि अगर ये दिया हुआ है ना, जैसे ये ए है, ये ए है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ड्रॉप करना पड़ेगा परपेंडिकुलर, ताकि मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए। इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हो जाएगी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट वेन एवर यू आर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यू हैव टू फॉलो द राइट एंगल ट्रायंगल इन योर माइंड, इट शुड बी ऑलवेज इन योर माइंड, कि यार इसके बिना नहीं करना है ना। इसका जो भी हम थ्योरी डिस्कस करेंगे ना ट्रिग्नोमेट्री में, वो तभी सेंस बनाती है अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। वो भी मैं रीज़न भी बताने वाला हूँ हर चीज़ का क्यों। बट पहले थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल को समझते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये होता है ना, लास्ट क्लास में भी एक बच्चा बोल रहा था कि सर अगर मैं सब्जी लेने जाता हूँ तो वहाँ पर मैं ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी यूज़ कर रहा हूँ, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ क्या है मेरी लाइफ में, है ना, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वैलिड क्वेश्चन है ना। तो मैं आज आपको बताता हूँ, और मैंने उस बच्चे को एग्जाम्पल भी दिया था कि बेटा अगर तुम सब्जी लेने जा रहे हो, वहाँ पर तुम ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं यूज़ कर रहे, बट तुम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल वो यूज़ कर रहे हो, मैंने बताया था पूरा। तो ना ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पर यूज़ हो रहा है। अच्छा अब ध्यान से देखिए, मतलब ये चीज़ें आई क्यों, है ना, ये थ्योरी आई क्यों, मैं वो बता देता हूँ। पहले ध्यान से देखिए हुआ क्या, ये ना, ये एक बिल्डिंग थी, ओके,
ये क्या थी, एक बड़ी सी बिल्डिंग थी ये, ठीक है, जैसे मर्जी मान लो। ये एक बड़ी सी बिल्डिंग है, फॉर एग्जांपल ABC लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर। AB एक बड़ी सी टॉल बिल्डिंग है, ठीक है। आपने क्या किया, उस बिल्डिंग का दरवाज़ा यहाँ पर था फ्लोर पर, है ना, यहाँ पर। इससे ना थोड़ा सा दूर जाके 10 मीटर, 20 मीटर, 1 किलोमीटर आप दूर जाकर ना खड़े हो गए एट पॉइंट सी। ओके, यू आर एट पॉइंट सी, यू आर एट पॉइंट सी। अब हुआ क्या कि आपका एक दोस्त था जो कि थोड़ा सा शैतान था, उसने क्या किया, वो बिल्डिंग के टॉप पर टेरेस पर जाकर खड़ा हो गया एट पॉइंट ए। अब आप खड़े हैं नीचे एट पॉइंट सी, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूं, अगर मैं पॉइंट सी पर खड़ा हूं, है ना, मुझे अपने दोस्त को टेरेस पर देखना है, तो क्या मैं ऐसे सीधे सीधे देख सकता हूं? ये तो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, वो टेरेस तो ऊपर है। सो आई नीड सम एलिवेशन, राइट। तो मुझे में क्या करना पड़ेगा, अपने हेड को थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। आई नीड सम एलिवेशन, राइट। तो ये जो एलिवेशन है, ये जो एलिवेशन आपने लिया है ना, थोड़ा अपना गर्दन ऊपर करके जो आपने एलिवेशन लिया, सो दिस इज अ एंगल थीटा, दिस इज अ एंगल थीटा। ओके, जो आपने एलिवेशन लिया है ना ऊपर देखने के लिए, वो एंगल थीटा। मतलब सी पॉइंट असल में कौन सा पॉइंट है, यहां पर आप खड़े हैं। ओके, यहां पर आप खड़े हैं, आपकी आई जो है ना, आंख से ये बन रहा है, राइट, यू आर गेटिंग ना, कि ये आंख से बन रहा है, आप उसको देख रहे हैं। दिस इज हॉरिजॉन्टल, मतलब आंख से हॉरिजॉन्टल सरफेस और आंख के बीच में, उसके बीच में जो एंगल बन रहा है ना, वो थीटा है। ओके, थीटा को एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन भी बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये वो वाला एंगल है, ये ऑलवेज मेक्स विद द आई। ओके, ये आई के साथ बन रहा है। यहाँ पर आपका फ्रेंड खड़ा था। अब ना सिचुएशन ये है कि बिल्डिंग वालों से आपने पूछ लिया कि भाई बिल्डिंग कितने की है, 10 मीटर ऐसा कुछ है ना, जो भी सिंपल एक केस ले लो, ठीक है। चलो 100 मीटर ले लिया मैंने, है ना, ऐसा कुछ ले लिया कुछ भी ले लो, या चलो एक काम करते हैं 10 मीटर ही ले लेते हैं। 10 मीटर की बिल्डिंग है और आप इस तरफ ना 5 मीटर इस तरफ खड़े हो। आपको ये भी पता है, ग्राउंड पर डिस्टेंस नाप लिया बिल्डिंग वालों से, बिल्डिंग की हाइट पूछ ली, है ना। तो ये पता किया जा सकता है, ट्रिग्नोमेट्री ये बोलती है कि अगर आपको बिल्डिंग की हाइट पता है, अगर आप उससे एक डिस्टेंस पर खड़े हैं, आपको वो भी पता है, तो ये जो हाइट है ना आपका फ्रेंड और आपके बीच में, ये जो हाइट है, ये वाला जो डिस्टेंस है, इसको भी पता किया जा सकता है, क्योंकि ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। एंड आई थिंक एवरीवन नोज कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है तो वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। सही है, पाइथागोरस थ्योरम कर सकते हैं। यस, पाइथागोरस थ्योरम कर सकते हैं। अब यस, पाइथागोरस थ्योरम में भी मैं आऊँगा, अभी थोड़ा सा बाद में आते हैं, बट एक चीज़ ना मैं पहले बताना चाहता हूँ। अब ये इतना बेसिक ये चीज़ है, और बेसिकली नाउ मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, द कन्वेंशन। कन्वेंशन मतलब रूल क्या है, ओके। कौन सी एक कन्वेंशन है जिसको मुझे हमेशा फॉलो करना है, जो रूल मेरे ट्रिग्नोमेट्री के या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी क्वेश्चन में वो चेंज नहीं होगा, दैट रूल विल रिमेन द सेम। ओके ओके, अच्छा ठीक है। रूल क्या होता है कि जो आपका एंगल थीटा है ना, उसके सामने जो भी साइड होती है, ओके, द साइड अपोजिट टू एंगल थीटा इज ऑलवेज योर परपेंडिकुलर। उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, पी बोलते हैं। ओके, और बहुत सारी बुक्स में इसको अपोजिट साइड भी बोला जाता है। ओके, इसको परपेंडिकुलर या अपोजिट साइड बोला जाता है। अब दूसरी बात यह है कि परपेंडिकुलर के साथ वाला, परपेंडिकुलर के साथ वाला जो 90 बना रहा है ना, साथ वाला का मैथमेटिक्स में क्या होता है वर्ड, एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब साथ वाली साइड। या मोनिका मुस्लिम या हेलो बच्चे जी, यस परपेंडिकुलर, या पी बोलते हैं उसको, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ओके, और जो परपेंडिकुलर के साथ वाला है ना, साथ वाला मींस एडजेसेंट साइड, वो क्या होता है, हमेशा बेस होता है। और वैसे भी अगर सिंपल बात करूं तो फ्लोर को बेस बोला जाता है ना। जो ऊपर बिल्डिंग है उसको क्या बोलेंगे, क्योंकि 90 पर गिर रहा है ना, उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। हेलो सर, अजय टेक वाला CH। हेलो बच्चे जी, जितने भी बच्चे आए हैं, प्लीज़ मेरी एक ही रिक्वेस्ट है सबसे कि इस वीडियो को ना बीच में छोड़ के मत जाना,
क्योंकि फिर बहुत सारी चीज़ें हम मिस कर देंगे, ठीक है। सर थीटा क्या होता है? यस यस यस, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बीच में मत छोड़ के जाना वीडियो को, क्योंकि ये वन शॉट इतना खतरनाक होने वाला है ना। क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एन आईटीएन, ठीक है। आईटी तिरुपति से मेरा मास्टर्स रहा है, एमएससी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद वेदांतु में मैं काफ़ी समय से जॉब कर रहा हूँ, वहाँ पर भी हमारा ऑनलाइन चल रहा है बहुत कुछ। तो बात ये है कि ट्रिग्नोमेट्री मैंने ऑफलाइन बहुत बार पढ़ाया हुआ है, नंबर ऑफ टाइम्स, बहुत बार, और बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझ आया था। तो ऑनलाइन में ये फर्स्ट लेक्चर है और ये वन शॉट है। तो इसको अगर अगर किसी बच्चे ने पूरा देख लिया ना, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस, क्वेश्चंस इतने ज़्यादा डिस्कस होंगे ना बेटा, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। ये वन शॉट वो नहीं है कि थ्योरी ज़्यादा डिस्कस होगी क्वेश्चन कम, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन ज़्यादा डिस्कस होंगे। थीटा मैं बता देता हूँ, देखो थीटा मतलब पता क्या है? थीटा जो है ना, थीटा जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक एंगल है, ठीक है। थीटा में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कि ये अगर, हाँ यहाँ पर सी लिखा, मैं इसको एंगल सी भी बोल सकता हूँ, जिसको थीटा नहीं बोलना उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आइडेंटिटी वाला थोड़ा कंफ्यूज करता है बेटा। बेटा बिलीव मी, आज मैं इतने खतरनाक क्वेश्चन करने वाला हूँ ना, प्रूविंग वाले, आइडेंटिटीज इतना ज़्यादा करेंगे कि आपको इस 2-3 घंटे के लेक्चर में ना सारी आइडेंटिटीज याद हो जाएंगी और आप कभी भूलेंगे नहीं, पक्की बात है, ठीक है। एंगल, एंगल होता है थीटा, यस 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 बच्चे। एक्सेल अदी, सर आई एम फ्रॉम मणिपुर, आई डोंट नो हिंदी, प्लीज टीच इन इंग्लिश सर। ओके 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 ओके, या एंगल होता है। देखो अगर हिंदी से, अगर इंग्लिश से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, है ना, आई होप कि इंग्लिश सबको समझ आता है, तो आई शुड टीच इन इंग्लिश फॉर मोनिका। यस, चलो ठीक है भाई, इंग्लिश कर देते हैं, है ना। आई होप कि किसी को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो या, सो वी शुड गो फॉर इंग्लिश बिकॉज यू नो some students not know Hindi. Okay, okay, no issue, no issue. Yes, what I was saying, always remember that first of all the theta is just a angle, okay. Theta is just a angle. Theta is just a angle like angle B, angle C, angle D, like that only, okay. Now this one, okay, side opposite to theta, this is always called perpendicular, perpendicular, okay. And the adjacent side means just next to it, okay. Adjacent side is called, प्लीज़ हिंदी में पढ़ाइए, मुझे इंग्लिश समझ नहीं आ रही। अरे यार अब ये क्या करें, सम स्टूडेंट इज सेइंग टीच इन इंग्लिश एंड द अदर स्टूडेंट इज सेइंग टीच इन हिंदी, व्हाट शुड आई डू? अरे यार ये फंसा दिया तुम लोगों ने, ये जस्ट मेक मी इन ट्रबल। what do I do? Actually in Vedantu I am teaching in English and Hindi, Punjabi also. I am from Punjab, my mother tongue is Punjabi. Monica is from Manipur ना यार, हिंदी में रखें फिर, क्या बोलते हो? मोनिका बच्चे, आई थिंक देन वी शुड go in Hindi only, I think. Yeah, one sec. Okay. Sir, how can I understand if teach in Hindi? Yeah, what to do? अजय टेक वाला CH, बेटा आई थिंक, अच्छा आप उड़ीसा से हैं?
ओके ओके, ही इज़ फ्रॉम ओडिशा। बेटा आपको आई थिंक इंग्लिश में समझ आ जाएगा, इंग्लिश नॉर्मल ही है। अरे यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, देन आई शुड टीच इन टू सेपरेट वीडियोस फॉर इंग्लिश मीडियम एंड फॉर हिंदी मीडियम। यस सर, आई एम फ्रॉम ओडिशा। फाइनल, what is your final decision? You can tell me Hindi or English. You can decide. फंसा दिया यार तुम लोगों ने, आज तो लैंग्वेज की लड़ाई शुरू हो गई है। इंग्लिश सर, मोनिका इज सेइंग इंग्लिश। इंग्लिश में कंटिन्यू करें क्या? हाँ, इंग्लिश आता है लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत करना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। अजय टेक वाला CH, आई विल प्रॉमिस यू कि इंग्लिश बहुत इजी रहेगी, ठीक है। बबली मासी तो होना ही ना, मेरे को नहीं टाइम आएगा बाद विच। ओके, यस यस यस, इंग्लिश बहुत सिंपल रहेगी, डोंट वरी। कुछ नहीं समझ आएगा ना, आप हिंदी में बता देना कि सर समझ नहीं आया, सो आई विल रिपीट इन हिंदी, डोंट वरी। ओके, यस यस यस, सो ये सॉर्टेड हो गया। यस, सो वी विल कंटिन्यू इन इंग्लिश बट वी विल मेक इट सिंपलर फॉर अदर स्टूडेंट्स। ओके, या, सो नाउ यू कैन सी side opposite to theta is always perpendicular, and side opposite adjacent to this 90 degree, adjacent means the next to it, so this is B, base. Okay, and always remember that okay, the side opposite to 90 degree is always hypotenuse, okay, so HBP, very important. Now, why this convention is important? You know how we will solve in questions. Just see. For example, in some question, I change the theta. For example, I change the theta here. Okay. Now I am at the terrace, my friend at the ground, and I am just watching him like this, right? So now these things are changed, right? Because the convention remain the same. Side opposite to angle theta is perpendicular. Now this is P. Side which is adjacent to the perpendicular, this is base. Simple. And you can see the one important thing, H remains the same because the definition of H is side opposite to 90 degree. This is remain same, right? Very important. Now we have to use the Pythagoras theorem. Okay, what is the Pythagoras theorem? Pythagoras theorem is saying if you do H square, hypotenuse square, so this is square of the other two sides, sum of the squares of the other two sides, okay, B square plus P square. So this is CA is base, sir. No. CA is not base. CA is hypotenuse. Okay. This is perpendicular now. CB is perpendicular. Okay. AB is a base now. Okay. Yes. AB is a base. Okay. Now, if I ask any student what is the Pythagoras theorem, then they said the same thing, H square is equal to B square plus P square. Then I ask, this is a mathematical definition. What is the meaning? For theta, sir? For theta is this is perpendicular, na? This is base. Acha, for theta you are saying okay, CA. Actually, you know, the base means this one only. If this is a base, something has to be dropped at 90. Then this is a base. Okay, then this is a base. This is the actual meaning of base. Okay, something should be dropped like this. For example, I have this wall in my room. Okay, if you see the corner of the wall, this wall is dropping on my floor. So my floor is base,
this line is for me, this is the perpendicular, right? Yeah, it is dropping at 90. So this is a definition of base. If I ask any student what is the definition of Pythagoras theorem, accept this formula. So actually, what is the Pythagoras theorem is telling us? Pythagoras theorem is telling us that h, hypotenuse, is the greater side, right? Hypotenuse is the greater side, because you can see you will get h square if you add the other two sides. Okay, if you want to find h square, you have to square and add the other side, then you will get this. It means h is greater than b, h is greater than p, right? H is always greater. Yeah, h is always greater, right? Now actually I want to finish the theory part first, and then we will go for the questions only. Now I want to tell you now I just want to tell you for okay, convention is done. Now trigonometric ratios. Okay, what are the trigonometric ratios? सर जल्दी क्वेश्चन लाएं. या एक्चुअली मैं सोच तो रहा हूँ कि क्वेश्चन करे, बट मैं सोच रहा हूँ ना कि पहले थोड़े फॉर्मूलाज बता दूँ, है ना, क्योंकि आई थिंक एवरी स्टूडेंट इज़ नॉट कंफर्टेबल विद फॉर्मूलाज. if you are comfortable with formula, then we can do the question, no issue. Okay, but I just want to tell you that how to remember those formulas, right, so that this class will be so easy for you. Okay, so first of all, trigonometric ratios. Okay, how to remember these trigonometric ratios? What are the trigonometric ratios? Means you have that h, b and p. Now you will divide them. This is your 90 degree, this is your theta, this is p, this is b, this is h, right? Now always remember that sine theta, sine of this angle theta, sine of this angle theta, sine of this angle theta, this is equal to p by h, perpendicular by hypotenuse. Okay, perpendicular by hypotenuse, and cos theta is always equal to b by h, base by hypotenuse. Okay, base by hypotenuse. Then tan theta is equal to p by b, and then okay, actually you have to remember sine theta, cos theta and tan theta only. Okay, yeah, sine theta, cos theta and tan theta only. After that, who is abusing? Some students is abused in class. Okay, बेटा जो भी ये बच्चा है, ठीक है, आप प्लीज़, अगर ये क्लास आपके लिए नहीं है, ठीक है, हम रोज़ यहाँ पर पढ़ते हैं और यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई की बातें होंगी, ठीक है. जिसको भी कोई और प्रॉब्लम है वो बच्चा जा सकता है, हम आपके लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है. ओके, ये एक प्रॉपर मैथमेटिक्स क्लास है, ट्रिग्नोमेट्री किया जा रहा है. जो बच्चा उसके नज़दीक भी नहीं है, जिसको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, जो बकवास करने आया वो जा सकता है, ठीक है. ओके, ठीक है, याद रखो, आई एम फ्रॉम पंजाब, ठीक है, पंजाब से हूँ मैं, ठीक है. ऐसी कोई भी बकवास बिल्कुल नहीं चलेगी, ठीक है. पंजाब तो मैं, ठीक है, तो इत्थे कोई भी बकवास नहीं चलनी. पंजाबी दे विच दस रहे हैं, जिन्हों भी कोई प्रॉब्लम है जस्ट गेट आउट. ओके, डोंट वेस्ट माई टाइम एंड योर टाइम, ठीक है. आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को. आपको कोई बकवास करनी है बेटा, बहुत सारे लाइव्स और चल रहे होंगे आपके तरह के. जो लोग गालियाँ दे रहे हैं ना, उनके लाइव पे जा और वहाँ पर गालियाँ दे. बकवास यहाँ पे मत करना, ठीक है, नहीं तो काम ख़राब हो जाएगा तेरा. प्लीज़ गेट आउट. ओके, फॉर दैट वन, क्या नाम है इसका, स्वास्तिक सूद. ओके, या जस्ट फोकस. या ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट cosec theta is always, okay, I will remember these three only: sin theta, cos theta and tan theta. Cosec theta, what is cos theta?
cosec theta is 1 by sin theta. 1 by sin theta means I will reverse the sign. So h by p, h by p. Okay. What is sec theta? Sec theta is always 1 upon cos theta. Okay, it means reverse of cos. So h by b. What is cot theta? Cot theta is 1 by tan theta. It means you will reverse this one. So b by p. Okay. So b by p. Yeah. Okay. Yes. Yes. If any student any confusion in remembering these formulas, then I have a one specific one trick to remember this. Always remember this in Hindi. In Hindi, this one. Pandit Badri Prasad हर हर बोले. ओके. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. एंड ही हैज़ अ शॉप. ओके. सो करोड़ से करोड़ मतलब ही इज़ वेरी रिच. ही इज़ जस्ट praising his God, and he is doing his job of Sona Chandi, gold and silver, and he is very rich. Crore se crore. He is dealing in crores, right? Okay. Yes, yes, yes. Pakistan bhuka pyasa. Yeah. This is another trick. This is another trick. Okay. Yeah. So you can do like this. That thing is also true. Pakistan bhuka pyasa, Hindustan hara bhara. That's also true. Okay, but I am doing this one. Pandit Badri Prasad har har bole sona chandi tole crore se crore, and then you have to make this one. You have to make this one. Okay? Yeah, yeah. Yes, बच्चे. Hindustan हरा भरा. Hindustan तो हमेशा हरा भरा ही रहेगा. जी. Yes. Then what you will do? You need tan theta. This is tan theta. Okay. If you need tan theta, then tan theta is in the here, so you will come like this. Okay. So tan theta is here in the downward direction, so you will say p upon b is tan theta. This is your cos theta. Your cos theta is b by h. Cos theta is denominator, so this is b by h. You will go in this direction. This is sin theta. Sin theta means p by h. P by h. Okay. Yes, yes. So tan theta is p by b, cos theta is b by h, sin theta is p by h. Now, what are these? Numerator, this one, this one, this one. So for this one, you will change the direction. This is cosecant. Cosecant theta is h by p. You will go in this direction. H by p, because it is here upward. So h by p is cosecant theta. And basically it is 1 upon sine, opposite of sine, right? Yeah, h by b is secant theta. H by b is secant theta, opposite of cos, right? B by p is cot theta. B by p is cot theta. Okay? Yeah, understand, sir. G. Okay, so this is how you can remember these 6 trigonometric ratios. Okay, but believe me, if you are solving 10 questions, then you don't need this. Okay, you can always remember that sine is p by h, cos is b by h. Okay, h is there in both. Tan is p by b. Okay, tan is p by b. And also what you are doing actually in tan theta, you are dividing sine theta with cos theta. You can see. Okay, this is the formula. Sine theta is p by h, cos theta is b by h, right? This is division of two rational numbers, and I know p by h numerator remain the same. Division change into multiplication. This will be reversed. It means h by b. So you can see h and h will be cancelled. So p by b. So tan theta is p by b. So you can see if you're dividing the first two, you will get p by b. Okay? Clear, sir? Clear, sir? Yes. So we can do, I think, some questions on this topic. Yes. We can do some questions on this topic. Okay.
This one. जल्दी क्वेश्चन लाए सर. Yes. Okay, I hope this is clear. This is clear. Yeah. Now you can do one question. You can do one question. This one. Yeah. Given question is, given cot theta is, cot theta is 3 by cot theta is 3 only. Cot theta is 3. What is the value of cos theta? RD RS के क्वेश्चंस. एक्चुअली RD शर्मा या RS अग्रवाल अभी इस समय मेरे पास नहीं है. हाँ, बट मैं ले लूँगा अगर आप चाहते हैं. अभी एक्चुअली मेरे पास क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ जो हमारे पास बोर्ड में आए हुए हैं. बाकी कोई बात नहीं, वो भी करवा देंगे, डोंट वरी. ओके, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ cos theta? तो cos theta, you have to find the cos theta. Options are there. Options are 1 by 3. B is 1 upon root 10. Root 10. Your C is 3 by root 10. Okay. And your D, yeah, D is cannot be determined. Okay, so you can't find anything. This data is not sufficient. D option is saying this. Okay, so you can try. Okay, very easy question. Okay, they can give you anything, any trigonometric function, trigonometric ratios. They can ask for anything. Okay, so yes. So what is given? Cot theta is 3 by 3. If it is 3, so I can write 3 by 1. No issue. I can write 3 by 1. Now I know what is cot theta. Cot theta is 1 upon tan theta, right? And tan theta, I know. Tan theta is P by B. It means this is B by P, right? So this is B by P. Yeah. This is B by P. Okay, option C is correct. Okay, let me check. Yes, बहुत अच्छे बच्चे. This is correct. This is correct. Very good. Very good. Yes, B by P. Okay. Now, just listen me carefully. If you are doing any subjective paper, for example, your school paper. If you are doing any subjective paper, this is not MCQ. If it is a subjective question, then yeah. Monica is saying C is correct. Yes, bache. Good. If you are doing any subjective question, subjective paper, then you have to take K as well. K here. Okay. But if it is a objective type question, then you can avoid taking K because answer will be same. Okay. Now I will tell you how to take K and why we are taking K. That I will explain that why we are taking K. So here you can let your base equal to 3K and your perpendicular equal to 1K means K. Okay. K is any constant actually. K is any constant. Okay. Actually why we take K? Why we take K? Most of the students don't know. Why we take K? Because they give you just a ratio. Cot theta is 3 by 1. They did not told you that base is 3. They did not told you that P is 1. Because, why? Because this is just a ratio. Maybe this question is this. Cot theta is 30 by 10. That's also fine. Okay. Maybe your base is 30. Your P is 10. Because if you cancel out, you will get the same ratio. Okay. That's why they did not told you that the base is 3. They did not told you the P is 1. The
the factor you are cancel out na, that's why I take that k. If you divide this 3k by k, so it will cancel out, you will get the same ratio. Okay, so that's why it is allowed, you can take this. Okay, अजय टेक वाला सी एच बच्चे, अगर आपको इंग्लिश में मेरा कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी एज वेल. ओके फॉर यू. Yes, so that is the reason. Okay, so I will write here, so b and p is there, but for cos theta I know cos theta is b by h, so it means I need to find h. So I will use Pythagoras theorem. Using Pythagoras, okay, yes, Pythagoras is h square is equal to b square plus p square. Yes, so you can write b is 3k square plus k square. It means this is 9k square plus k square. It means this is 10k square. So what is my h? H will be under the root 10k square. So this is 10 and k square under root will be k only. Right? This is k only. Yeah. So h is equal to this, h is equal to this, yeah, h equal to root 10 into k. Okay, now I can find the cos theta. Cos theta is b by h. What is my b? What is my b? 3k by h. H is root 10 into k, right? So this is cancelled, so 3 by root 10. Yes, so you are correct. Very good, bachche. Option C is correct. Okay, yeah. Yes, yes. Okay, we have a one more question. Actually, I have a assertion reasoning question, so we can try that also. Yeah, I hope this is clear to everyone. Okay, we will do one assertion reasoning question. Every question will be there actually. Every question we will discuss, don't worry. Yes, assertion reasoning question. Assertion is saying we will do proving questions as well, don't worry. We will complete all the question. Assertion is saying if sin A equals to, yeah, if sin A equal to 1 by 3, okay, and here theta is lying between 0 and 90, basically acute, right? Yeah, then you will say, then the value of the value of cos A is very easy. You can try, bachche, you can try. If you are solving before me, then you are on the right track. That's what we need. Yeah. Okay, so you can check assertion is true or not. Reason. What is the reason? Reason is saying for every angle theta, yeah, for every angle theta, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So you have to check that. Yeah. Any answer for assertion? You can try. I will solve, don't worry. But you can check first. Yes. Okay. So you can see sin A is 1 upon 3. Okay. Then the value of cos A is this. Okay. So we can solve.
We can try. We can try this one. So sine A is equal to 1 upon 3. Okay. Sine A is 1 by 3. Sine A is 1 by 3. Okay. You have to find the cos A. Okay, I know this is P by H, right? This is P by H. A is false, R is true. Okay. शायद होगा ये. अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है. We can check, we can check. No issue. We can check. Yes. So, okay, this is a MCQ type. Nobody is looking for my solution. So, I will do directly. I can simply let, okay, although this is not true, but if I solving a question like this, so I can say my P is 1, my H is 3. I can take like this because it's a not, okay, it is like, yeah, but assertion reasoning we were solving, na? We should take K actually. We should take K. This is not MCQ actually. So P you can take K into 1 and H you can take 3K. You can solve for P. 1 second. No, B. This is B by H na. So yes, using Pythagoras theorem, you will write H square equal to P square plus B square. So I need to solve for B. So B square will be equal to H square minus P square. And B will be equal to under the root H square minus P square. Now I can substitute simply. What is my H? What is my H? 3K. 3K square minus P is your K square. So this is 9K square minus K square under the root. This is 8, right? Root 8 आएगा sir. जी. Root 8K square, right? And then you can separate root 8 into root K square, right? So this is equal to, okay, root 8 you can write 4 into 2 and this is square root cancel, so this is K only. And 4 is a perfect square, so 2 will be outside, so 2 root 2 into K. This is your base. If anything is not clear, you can tell me. Okay? या मेरे रूट को सिंप्लीफाई नहीं किया था. ओके 2 रूट 2 आएगा. यस बच्चे 2 रूट 2 आएगा. ओके, सो बेस इज 2 रूट 2 के, क्योंकि ऑप्शंस में इस तरह दिया हुआ है. तो अभी चेक करते हैं. व्हाट इज योर कॉस थीटा? सो कॉस ए विल बी इक्वल टू बी बाई एच, राइट? व्हाट इज योर बेस? So 2 root 2 into K divided by what is my H? H is 3K. So you can cancel out K with K. So 2 root 2 by 3. That is absolutely correct. Okay. So assertion is true. Assertion is true. Assertion is true. Now actually whenever you are solving this type of questions, so you always have to check when you solve the assertion and assertion is true. Then you have to see which reason you have used. By solving, when you are solving assertion, which reason you have used, right? So which reason I use? I use the Pythagoras theorem. That is my reason, right? I did not use this reason. No, not at all. You can see. I did not use this identity. Never, right? So it means assertion is true. Reason is not correct explanation of A. Reason is not supporting your assertion, right? But I can check, maybe the reason is, the separately it is true itself. It is nothing with the assertion, but maybe it is true. So we can check. We can check. For every angle theta, sine square theta plus cos square theta is 1. That is true actually. That is absolutely true. That is absolutely true. Because this is a identity. Sine square theta plus cos square theta. This is always equal to 1. Okay. You can take when theta is 0 degree or theta is 30 degree. So you can see this is always true. Okay. Because you can check sine square 0 degree plus cos square 0 degree. Sine 0 is 0, so 0 square is 0. Cos 0 is 1, 1 square, so this is 1 only, always. Or you can check with the other angle as well.
You can check with the, for example, you are taking sine 30 square plus cos 30 square. Sine 30 is 1 by 2 whole square. Cos 30 is root 3 by 2 whole square. So you will see this is 1 by 4. This is 3 by 4. So this is 4, 1 plus 3, 4 by 4. So this is again 1. Okay? Yes. So this is also true. So you will write assertion is true, reason is true. Okay? But reason is not a correct explanation of your assertion. Okay? Yes, very important question. So we have solved this question. Yeah. Okay. Now we can do some more questions. Every type of question I want to cover in today's class. Yeah. Okay, so question is, yes बच्चे हमने सिंप्लीफाई कर दिया है. You can match. Yeah. Okay, what is the question? Okay, one of the question is this. I can write this question and we can try. Yes, so we can try this question. Okay, this is also a big question. We can try. Not now, maybe 1 second. Yes, we can try this question. First of all, this question. Question is, in the figure below, this question is also important, bache. This question is also important. Question is, in the given figure below, in the given figure, okay, in the given figure, 5 sin p equal to 4. 5 sin p equal to 4. Yes, sir. G. 5 sin p is equals to 4. Okay. This diagram is given actually. This is very important question. I will tell you why. Okay. And everything I am telling you now, it will definitely make sense to everything in today's lecture. Very important. Okay. This one, this triangle, this is 15 units. 15 units. This is 15 units. Okay. This is 15 units. Yeah. Now they are saying, what is the length of PR? Okay. What is the length of PR? What is the length of PR? Draw a diagram and show your steps. Okay. Draw a diagram and show your steps. Yes. For this one you have to easy है sir. Okay. Yes बच्चे. You can try. Yes, it is easy. Okay. You can start solving actually. You know, you remember the first line? Of trigonometry? I told you. Never ever use trigonometry if you don't have a right angle triangle. This is a right angle triangle or not? Never. This is not a right angle triangle. So you can't use trigonometry. But the question is like this: 5 sin p equal to 4. Sin p is 4 by 5. It means you have to use trigonometry, but you don't have a right angle triangle. What you will do?
क्या करेंगे आप? आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है, क्या करें? परपेंडिकुलर. यस यस, वेरी गुड वेरी गुड. Okay, I told you in the starting, if you don't have a right angle triangle, you have to make it. You have to make it. The question is saying you have to draw the right angle triangle, and this is isosceles triangle, right? This is isosceles triangle. This is equal to this, so I can drop a perpendicular, yeah, between PR. Yes 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 yes, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे बेटा. एक्सेल आदि, एक्सेल आदि बहुत अच्छा कर रहे हैं. यू आर वेरी फोकस्ड एक्चुअली. गुड. या so I will drop a perpendicular from this vertex Q on this one, right? And always remember that this is a property of isosceles triangle. If you are dropping this one, okay, it is at perpendicular and it is the median as well. It means now this one equal to this. Okay, this happen in your isosceles triangle. Okay, yeah, this point is S. Okay, this is 90 degree, this is 90 degree. Yeah, very important, very important. Now you can see what they're asking. For example, first of all, sine P is 4 by 5, and I know sine P is 4 by 5, so sine is equal to 4 by 5. What is sine theta? Sine theta is my sine theta is sine P. It means this is my angle theta, right? They are asking about angle P, so sine P. So this is 4 by 5. Sine theta is P by H, right? Okay, okay. So this is P. So side opposite to angle theta, this is my P. This is my P, perpendicular. It means this is my perpendicular. What is this? SQ, right? So 4 by 5, my perpendicular is SQ, divided by hypotenuse. What is my hypotenuse? Hypotenuse is, this is 90, opposite to this. Hypotenuse is PQ, right? Base is 3. Base is 3. Yes, 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 yes. Very good, very good. Base is 3. Okay. So you can see how good this question is. Okay. Convention is not changed. Okay. Convention is not changed. And you just make the right angle triangle. Okay. Because most of the student may be confused in the exam. Because right angle triangle is not given. How they can ask for perpendicular base like this? So the first line of trigonometry will help you always. Very, very important line. Okay. Yes. So I know what is my PQ. My PQ is 15, right? SQ I don't know. Yeah. So I will write 4 by 5 is equal to SQ upon PQ. My PQ is 15, right? PQ is 15. So you can find SQ. You can find SQ. SQ equal to 4 by 5 into 15. 5 3s are 15. Okay. SQ will be equal to 12. SQ will be equal to 12. Yeah. Yes. SQ, this is equal to 12. This is equal to 12 units. What they're asking? They're asking for PR. Yeah. That is very easy. Because this is a right angle triangle as well. This is 12, this is 15. I can find this. Yeah, I can find this. Just I have to see this one, na? Okay. What should I do? What should I do? SQ is done. SQ is done. I don't know. Okay. You want to find PR, na? You want to find P. No, yeah, PR. You want to find PR. You can find this and you can double. Yes. Because this is given. So you can find this. You can find this. You can use that Pythagoras theorem, or you can use some other trigonometric ratios as well. Because I know PS is my, this is perpendicular, this is my perpendicular, this is my base, this is my hypotenuse, right? I want to find my base.
So I think I should find cos p, right? I should find cos p. What is cos p? What is cos p? Cos p is your base upon hypotenuse, right? And here if you see your base will be equal to, using Pythagoras theorem, your base will be equal to what is this? Base is equal to 3, right? Yes, yes. So you will write cos p is equal to base, it means 3, base by hypotenuse. Hypotenuse is 5. Hypotenuse is 5. But cos p is equal to 3 by 5. From here, cos p is this upon this, right? No. Base upon hypotenuse. Base upon hypotenuse. So you will write base, I mean PS, upon hypotenuse 15 is equal to 3 by 5. Is equal to 3 by 5. Okay. अभिषेक शर्मा, भाई क्यों परेशान हो रहा है? दो जाने ही दी क्या रहे हैं? ये क्या है? कौन है ये? बेटा आई कांट अंडरस्टैंड योर कमेंट एक्चुअली. परेशान हो रहा है कौन? परेशान हो रहा है? तू जाने ही दी क्या रहे हैं? समझ ही नहीं आ रहा. अच्छा ठीक है, छोड़ो. यस. अच्छा, आई थिंक we can try easily. We should use the Pythagoras theorem. Pythagoras theorem, if I use now, it will be more easy. No need to do